So यार previously we concluded the working of electromagnetic induction. So आज जो है ना वो alternating currents करना है. So inshallah we'll start with the working of diodes. Excuse me. All right here. So starting with the basic working of alternating currents. So your section of alternating currents in your syllabus is essentially divided into the working of diodes, or finally the concept of AC supply. Diagrams में साथ साथ बनाऊंगा और बेसिक लेआउट पहले बता दूं. फिर वापस लिखे आपने? नहीं, सारे तो नहीं लिखे, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ जितने कंक्लूड करके बना सकूं ना बना दूं. पहले यार डायोड की बेसिक थ्योरी और फिर आगे की वर्किंग मुझे साथ साथ लिखनी है, तो फिर वो लिख दूंगा. सो रिमेंबर डायोड्स भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट तुम लोगों ने ओ लेवल्स में किए हुए थे. मैं सिर्फ क्विकली उसको रीड थ्रू कर दूं और फिर आगे की वर्किंग देख लेते हैं. तो रिगार्डिंग द सिंबल ऑफ अ डायोड, ये तुम लोगों ने किया हुआ था. ये द ट्रायंगल इज द एनोड, द वर्टिकल लाइन इज द कैथोड. एंड वर्किंग आपकी ये होती थी कि when a diode is connected to a battery such that the anode, the triangle, is connected to the positive terminal and the vertical line, that is the cathode, is connected to the negative terminal of the battery. So इस केस के अंदर diode offers almost zero resistance and consequently allows a large amount of current to flow. This condition in O levels was referred to by the term forward bias condition, and this is how it can be illustrated diagrammatically. So forward bias के अंदर, when the triangle goes with positive terminal of the battery and the vertical line goes with the negative terminal of the battery, that is when the diode practically offers zero resistance or very, very low resistance and allows a large amount of current to flow. Consequently, you would expect the bulb to light up very brightly. This condition is the forward bias condition, जो O levels में तुम लोग करते थे. Extending this idea further, so in the next line, hence if a bulb is connected in the circuit, it lights up brightly, or if an ammeter is connected, it records a high current. So ये तो आपकी forward biased की condition हो गई. Further आगे, however, sorry guys, if we reverse the battery connections, that is, we connect the anode, so the triangle, this time to the negative terminal, and the cathode, the vertical line, this time with the positive terminal. So now the diode is going to offer a very high resistance and allows very little / zero current to flow. And this condition, for obvious reason, is referred to by the term reverse bias condition, और वो मैंने diagrammatically show करी हुई है नीचे. So this time around, the triangle is connected to the negative and the vertical line, that is the cathode, is connected to the positive. So इस case में the diode offers an infinitely high resistance. Consequently, no current flows and the bulb shown over here remains off. So further on, hence आगे की wordings भी देख लो और फिर next diagrams जो मुझे draw करने हैं, I'll move on to that. एक second ना. Alright, so hence if a bulb is connected in the circuit, it will not light up, or if an ammeter is connected, it will record zero current. ठीक है, तो first case में it allows current to flow through and offers zero resistance, forward biased, और second case के अंदर does not allow the flow of current to take place and offers infinite resistance. So forward versus reversed. अब इसका purpose क्या है? So conclusion पहले read कर लो, फिर इसके purpose को decide कर लेते हैं. So diode allows current to flow in one direction and stops the flow of current in the other direction. So अब extending this idea further, डायोड का यूज हम कहां पर करेंगे ना, उसकी वर्किंग कर लेते हैं. एक सेकेंड ना. इस डायोड का यूज क्या है या पर्पस क्या है बेसिकली? So diode is used to perform what is called rectification.
The term rectification means converting an AC supply into some form of a DC supply. Okay, so how do we achieve this? So imagine if an AC supply is given to you. I'll refer to the AC supply from now onwards as input voltage. Imagine आपके पास एक resistor लगा हुआ है. I will refer to the resistor from now onwards as the output voltage. So AC supply को मैं refer करूंगा as the input और resistor को refer करूंगा as the output. And imagine if you position a diode in the circuit as shown. Now, if you are asked to construct a graph of voltage against time for the AC supply, so I'm sure all of you would agree that the graph of input voltage against time for an AC supply should be something along these lines. मैं आधा पोर्शन रेड से बना रहा हूं, बाकी आधा ब्लू से बना देता हूं. So this is your regular shape of the AC supply. Now imagine if you are asked to construct a graph of voltage against time for the resistor. So I'm sure you would agree कि resistor के लिए आपकी graphical representation kind of इस तरीके से हो जाएगी. For the first half cycle, मैं first half cycle को red से बना रहा हूं. For the first half cycle, if I mark the terminals of the AC supply with a plus sign and a minus sign for the first half cycle, so I'm sure you would agree that for the plus and the minus sign that I've marked for the first half cycle, my diode appears to be in a forward biased mode, which means it allows the current to flow through. Consequently, we are able to get a waveform at the output. So for the first half cycle, when I assume my input supply in a manner such that कि मैंने इनपुट सप्लाई के टॉप वाले एंड को पॉजिटिव अज्यूम कर लिया और बॉटम वाले को नेगेटिव अज्यूम कर लिया. So for this particular stance, since the diode is forward biased, it lets the current flow through. So output पे आपके पास wave की pulse आ जाएगी. So the red graph goes with the red terminals, which I have marked as plus and minus. Now, right at the very next moment, when the supply switches, अब इसको blue से बना रहा हूँ. So the terminals of the supply have now been switched. मैंने plus और minus को flip कर दिया है. This diode will now be in a reverse biased condition. Consequently, current flow नहीं करेगा, voltage output पे produce नहीं होगा, and hence second half cycle पे you will literally get zero, or since the diode does not conduct and there is no flow of current, so no voltage will be delivered at the output.
तो मैंने ग्राफ को एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी राइट ऑन द एक्स एक्सिस. फिर वंस अगेन when the first half cycle comes in, again forward bias condition, so again graph बन जाएगा. And then right at the very next point, when the supply switches to the blue wali color, the reverse biased, and consequently no flow of current. So this is how the shape of the graph at the output would look like. And if you compare the two graphs, you can clearly see the reason as to why we were saying that the purpose of the diode is to perform rectification, where the term rectification meant we are converting an AC supply into some kind of a DC supply. So diagram does imply the fact that diode has behaved as a rectifier in this case. ठीक है. So जो wording राया ने भी लिखी है ना, वो wording भी सही है. Blue portions won't exist. इस तरह से भी बोल सकते हैं. Now, the question does arise कि इसका फायदा तो है कि we have converted उमर अभी उसकी तरफ आ रहा है. इसका एडवांटेज तो डेफिनेटली ये तो एडवांटेज है कि yes, AC has been converted into DC. पर इसके आई थिंक डिसएडवांटेजेस भी हैं. और मेरा ख्याल है आप अग्री करेंगे कि एक डिसएडवांटेज तो ये है कि 50% पावर इज लॉस्ट एट द आउटपुट. सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप रजिस्टर को रिप्लेस करो और अगर आप आउटपुट पे बल्ब लगा दो, तो एक तो बल्ब आपका कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ होता जाएगा, तो कंटिन्यूअसली आपका बल्ब फ्लिकर करेगा. एंड सेकेंडली, बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी वो भी कंटिन्यूअसली वेरी करेगी. So yes, rectification does serve to be of an advantage to us that we have converted the AC supply into DC, but it comes in with a few disadvantages. The first one being 50% power is lost at the output. And the second disadvantage, if a resistor is replaced with a bulb, then you would expect a bulb आपका continuously flicker करेगा, on off होता जाएगा, and the brightness of the bulb is also going to vary continuously. इन problems को sort out कैसे करना है? Before I move on to that, because of these problems, this kind of a wave is given a special name, and this kind of a wave is referred to by the term half wave rectification. A half wave simply because of the fact कि आपको आउटपुट पे आधी वेव मिल रही है और बाकी की आधी वेव लॉस आउट हो गई है. सो पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं यार, अगर आपको ये इंश्योर करना हो कि ये प्रॉब्लम्स जो मैंने रजिस्टर किए हैं, इन प्रॉब्लम्स को अगर मुझे सॉर्ट आउट करना हो, सो क्या करेंगे? सो वन वे सो एक ऑप्शन ये है कि प्लेस अ कैपेसिटर in parallel
at the output. Now, before I show how would a capacitor facilitate us, पहले wordings लिख दूं. What purpose will it serve? So remember from the theory of capacitors, इनका main purpose हुआ करता था कि ये charge और energy को store किया करते थे. तो if you place a capacitor in parallel across the output, तो उसके आने से क्या advantage होगा? तो पहले मैं wordings लिख लूं, फिर diagram पे उसको draw करके दिखा देता हूं. When the supply is on a rise, the capacitor will charge itself so that when the input supply begins to fall slash drop, then the capacitor will discharge itself via the resistor, and in doing so, comma, it will provide extra charge to the resistor. This will help to regulate slash stabilize the voltage across the resistor. This effect is known as smoothing. The effect is shown below. So if I position a capacitor in parallel with the resistor, let's see advantage क्या होगा. So I'm reconstructing the same diagram. तो जो ऊपर बना हुआ था ना, उसी को kind of दोबारा से reconstruct कर रहा हूँ. So the AC supply, then there was a diode, then the resistor, and now the only difference in this circuit would be that we have positioned a capacitor in parallel across the resistor. अब what purpose will it serve? तो अगर आप statements को देखो, when the supply is on a rise, comma, the capacitor will get the opportunity to charge itself. When the supply shows a rising behavior, capacitor uses up that opportunity in order to start charging itself. Second point, so that when the supply begins to drop or it begins to fall, then the capacitor will discharge itself via the resistor, and in doing so, it will provide extra charge to the resistor. फायदा क्या होगा? This will help to regulate slash stabilize the voltage across the resistor, and this effect of stabilizing the voltage is known as smoothing. मैं diagram पे इसको draw करके दिखाता हूँ.
So the original waveform at the output was of this kind. The combination of the red and the blue, which was referred to as half wave rectification. So ये शेप आपके पास ओरिजिनली आ रहा था. मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं. So I'm just kind of repeating the format again. इतना काफी है. मैं इसी शेप को वापस बना देता हूं. So I'll leave the original and I'll make any necessary adjustments on the second diagram. एक सेकेंड. All right. So how would having the capacitor serve our purpose? So when the supply is on a rise, ये वाला portion, when the supply is on a rise, the capacitor uses up this opportunity and charges itself with the intention कि जब आपकी supply drop करेगी, so whatever charge the capacitor has accumulated, वो अपने सारे के सारे charge को via the resistor lose out करना शुरू हो जाएगा. So फायदा ये होगा कि जब supply आपकी drop कर रही होगी, then the capacitor will facilitate the resistor by providing the resistor with extra bit of charges. If the capacitor sacrifices itself and provides extra bit of charge to the resistor, then this will certainly help to regulate or to stabilize the voltage across the resistor. So फायदा ये होगा कि the voltage is not going to drop down as quickly as it was dropping down earlier on, but rather the drop in the voltage will be much less steeper. Consequently, if you compare the first diagram with the second one, so you can clearly see that the presence of the capacitor has actually brought about a stability in the output voltage, and this effect is referred to by the term smoothing. So the original diagram is the one that's shown in figure 1. And the smoothing effect created as the capacitor discharges itself via the resistor is shown in figure 2. The advantage of the second diagram is that surely the voltage has been regulated or the voltage has been stabilized. तो पहले आपके पास वोल्टेज में जितना राइज और फॉल आ रहा था, जितना फ्लक्चुएशन आ रहा था, सो एज टू से हमने उस फ्लक्चुएशन को टू अ लार्ज एक्सटेंट रिड्यूस कर दिया है. So having a capacitor allows us to stabilize or to regulate the output graph, or in short, the presence of the capacitor provides what is called a smoothing effect. Now, diagrammatically speaking, if I were to ask you to highlight the individual sections, कि रेड में क्या हो रहा है, ग्रीन में क्या हो रहा है, तो I believe आप agree करेंगे कि when the supply is on a rise,
This is the time when the capacitor charges itself. And when the supply is on the verge of a fall or a drop, then that is the portion where the capacitor discharges itself. And in doing so, the intention of the capacitor is to somehow regulate or to somehow stabilize the output voltage across the resistor. तो जो पहले major fluctuations आ रही थी as the value of the voltage was rising all the way to maximum, then dropping all the way down to zero. अब हमने उस fluctuation को to a certain extent reduce कर लिया, and this effect is referred to as smoothing effect. इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये कि सर जो आपके पास पहले बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था या बल्ब की ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही थी because the voltage was rising and then falling all the way down to zero, then again rising, then again falling. Surely आप appreciate करोगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैंने उसकी flickering effect को बिल्कुल negate कर दिया है. Certainly not. ये अब भी flicker करेगा. But the degree of flicker uh, has been reduced to quite an extent. So I'm not saying that the voltage has become perfectly horizontal. So ऐसा नहीं है कि हमने voltage को बिल्कुल ही flat out steady कर दिया है. But at least ये हो गया है कि पहले जितना ज्यादा वेरिएशन इन वोल्टेज हो रहा था हमने टू अ लार्ज एक्सटेंट उस वेरिएशन को रिड्यूस कर दिया है. ठीक है. सो ब्राइटनेस के अंदर पहले बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रही थी. पहले पूरा ऑफ हो जाता था, फिर पूरा ऑन हो जाता था, फिर पूरा ऑफ हो जाता था, फिर दोबारा पूरा ऑन हो जाता था. अब कम से कम उसके फ्लिकरिंग इफेक्ट को हमने टू अ लार्ज एक्सटेंट रिड्यूस कर दिया है. खत्म नहीं कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है. अब स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ये चीज पूछने का शौक होता है कि सर अगर हमें और भी इंप्रूवमेंट करनी हो तो हम क्या करें. तो आई थिंक इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको एक कैपेसिटर लगाने के बजाय दो कैपेसिटर्स लगा देने चाहिए. अगर बहुत ज्यादा दिल करता है तो तीन लगा देने चाहिए, चार लगा देने चाहिए पैरेलल के अंदर. अब आप खुद देखें, मैं जितने ज्यादा कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाऊंगा मेरे पास बेनिफिट आता जाएगा. तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ स्मूथनिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव, you can place as many capacitors in a parallel combination as you like. And if I were to reconstruct that diagram, this time showing multiple capacitors connected in a parallel combination. So surely having two, three, or four capacitors will certainly provide a much better smoothing effect. देखिएगा क्यों. पहले एक था, अब आपने एक और लगा दिया. बस दो लगा देता हूं ताकि आइडिया समझ में आ जाए. So having two capacitors in parallel certainly serves our purpose better because पहले एक चार्ज हो रहा था. अगर दो होंगे ना तो दोनों को चार्ज अप होने का मौका मिलेगा. पहले सिर्फ एक डिस्चार्ज कर रहा था, अब दो होंगे तो दोनों कलेक्टिवली डिस्चार्ज करेंगे. एडवांटेज ये होगा कि रेजिस्टर को ज्यादा चार्ज मिलेगा व्हेन इट रिक्वायर्स. कॉन्सिक्वेंटली द इफेक्ट ऑफ स्मूथनिंग कैन बी फर्दर एनहांस्ड. सो ऑन द सेम ग्राफ जिस पे मैंने सिंगल कैपेसिटर का इफेक्ट बनाया था ना, if needed, so having two capacitors or having three capacitors or having four capacitors is certainly going to make the line more and more flatter, so as to say. So that green one was for a single capacitor, and the mustard color line which I have constructed right now, rather isko thoda sa highlight kar दूं. ये mustard वाला graph for having
multiple capacitors in a parallel combination. Uh, जो शकीब और रहमान ने पूछा है ना क्वेश्चन, पहले मैं उसका आंसर दे दूं. So यार शकीब ने पूछा, is it possible to make the graph completely horizontal? Actually, real life में शकीब, it doesn't really matter to us to make the graph completely horizontal because beyond a certain point, human eye उस flickering effect को judge नहीं कर पाती. है ना, जिस तरह वो आपके पास एक रिफ्रेश रेट होता है सेल फोन्स के अंदर, तो बिल्कुल वैसे ही एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड हमारे आई के रेटिनास उस माइनर फ्लक्चुएशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं. सो वी आर नॉट, आवर आईज आर रादर नॉट सेंसिटिव इनफ to see that very, very small amount of variation in the brightness. So ideally, we never want to go for a perfectly flat line because that is generally not needed. Because once it starts getting flatter, so beyond a certain point, any further flattening won't really be detectable by the human eye. इसलिए having a few capacitors kind of does the job for us. So फिर उसके beyond आपको बिल्कुल perfectly flat line के आने से कोई खास फायदा नहीं होगा. There will be no further improvement in terms of visualization because your eye will not be able to perceive that small variation, if any, which is taking place in the brightness. तो शायद perfectly horizontal line बनाना हमारा कभी मकसद होता भी नहीं है. And once we are able to reduce the flickering effect to a great degree, the job kind of gets done. So having a few capacitors in a parallel combination kind of serves a purpose. अच्छा, um, इससे ऊपर दो लोगों ने कुछ और पूछा था, मैं जरा रीड कर लूं. मोहित ने पूछा था, विल द कैपेसिटर बी चार्ज टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल? मोहित, ये हम जस्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज दैट डिपेंड्स कि आपने उसको चार्जिंग में टाइम कितना दिया है ना. तो सिंस हमारे टाइम के एक्सेस पे कोई वैल्यूज लिखी हुई नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्केच, तो वी कांट रियली बी श्योर वेदर दैट टाइम इज गुड इनफ to ensure that the capacitor is charging to its full potential. But certainly, it will be able to charge nonetheless. Whether or not it charges all the way to its full potential remains to be seen because that will depend on the fact कि आपकी AC supply का time period कितना है. The more time you give it for the charging, the better it is. So, इस diagram से हम ये decide नहीं कर सकते कि is it able to charge to its full potential. But ये decide definitely कर सकते हैं कि ये charge तो हो रहा है. और रोहिल का स्टेटमेंट भी देख लेना कि अगर आप गलती से कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दोगे तो सीरीज में उल्टा फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा. तो अगर आपने सीरीज में लगा दिया ना, तो मैं लिख भी देता हूं, सीरीज में उल्टा इफेक्ट हो जाएगा. दैट इज, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ यू हैव लेट्स से 2 कैपेसिटर्स, इसका बेनिफिट ये होता है कि पैरेलल के अंदर इफ ईच कैपेसिटर हैज अ वैल्यू ऑफ C, then the total capacitance becomes 2C. Series में unfortunately, if you have the same 2 capacitors, based on the formula that we did earlier on, the total capacitance बढ़ने के बजाय कम हो जाती है, हाफ सी हो जाती है. तो जब आप चार्ज कैलकुलेट करोगे ना, तो पैरेलल विल ऑलवेज बी एबल टू स्टोर मोर अमाउंट ऑफ चार्ज. और सीरीज में हमेशा चार्ज कम स्टोर होगा. इनफैक्ट आई वुड गो ऑन टू से कि अगर सीरीज में लगाने का शौक है तो माइट एज वेल ना ही लगाओ, क्योंकि सीरीज में लगाने से इंप्रूवमेंट के बजाय ग्राफ और भी डिग्रेड हो जाएगा. तो अगर मुझे सीरीज को डायग्राम पे शो करना हो ना, पहले मैं लिख दूं लेस चार्ज स्टोर्ड, एंड ऑन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सीरीज का इम्पैक्ट ब्लैक कलर की लाइन से बना रहा हूं, बल्कि ब्लू से बना रहा हूं. तो सीरीज का उल्टा फायदे के बजाय नुकसान है. थोड़ा सा अनटाइडी हो गया है लेकिन नॉनदलेस आई गेस मैनेज हो जाएगा. So the mustard color line is for the parallel combination. The green colored was for a single capacitor, and the navy blue colored line is for multiple capacitors.
in series. ठीक है, so मैंने एक ही डायग्राम के ऊपर तीनों ग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है. इन शॉर्ट, सीरीज में लगाने से स्टेबिलिटी या स्मूथिंग या स्टेबलाइजेशन इंप्रूव होने के बजाय मजीद खराब हो जाएगी, सो एज टू से. ठीक है, या the slope of the line, instead of becoming less steeper, instead of the line becoming flatter, the line is going to become more steeper. सही, तो उसका फिर फायदा नहीं है. ओके यार, 5 मिनट रुकता हूँ. मैं देख लूँगा मैंने शायद किसी का क्वेश्चन मिस आउट तो नहीं किया. जस्ट गिव मी अ सेकंड. यार किसी का क्वेश्चन रह गया हो ना, तो जरा मुझे प्लीज दोबारा लिख कर दे दो. आई डोंट क्वाइट नो कि कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो जरा मुझे बता देना, मैं उसको दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ. 5 मिनट्स रुक जाता हूँ, इसके बाद आगे कंटिन्यू करना है. तो अब सिंगल डायोड के बाद आगे की वर्किंग देखनी है. 5 मिनट्स में स्टार्ट करता हूँ. ऑलराइट सुलेमान, स्टार्ट करा दूं बेटा? इफ यू बैक फ्रॉम नमाज तो मुझे पहले ओके कर देना सुलेमान, इफ यू बैक. ठीक है यार. सो गाइस, इसी की वर्किंग आगे देख लेना. um, it's the continuation. What if multiple capacitors are unavailable? How can smoothing be improved? तो अगर कैपेसिटर्स होना तब तो इट गोज बियॉन्ड द पॉइंट कि हाँ ठीक है, ज्यादा कैपेसिटर्स को लगाकर यू कैन कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर स्मूथिंग. बट अगर मल्टीपल कैपेसिटर्स अवेलेबल नहीं हो, तो फिर आप स्मूथिंग कैसे अचीव करोगे? तो फिर इस केस के अंदर इट इज सजेस्टेड कि यू नीड टू रिप्लेस योर फिक्स्ड रेजिस्टर with a variable resistor as shown, and increase
the resistance of the variable resistor as high as possible. सब इसका क्या फायदा होगा? ठीक है। तो पैरेलल गलत हो जाएगा रोहिल. हाउ अबाउट अनदर रेजिस्टर इन सीरीज? बिकॉज पैरेलल के अंदर रिमेंबर कंबाइंड रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं थी, कम हो जाती थी. सही. अब कैसे देखें क्या फायदा होगा. सो मैं ओरिजिनल वाला डायग्राम बनाता हूँ वापस से. सो यू हैड अ सिंगल रेजिस्टर and you had one capacitor and that's about it. अब आपने रेजिस्टर को रिप्लेस कर दिया विद अ वेरिएबल रेजिस्टर. मैं रिप्लेसमेंट बना के दिखा रहा हूँ. और आपने इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया. So this is how the diagrammatic representation would now look like. The arrangement of the capacitor still stays the same. Now remember O levels के अंदर this is a parallel circuit. हाँ कर सकते हैं रोहिल. So O levels के अंदर आपने parallel circuits के बारे में, these are examples of parallel circuit. Both of these diagrams you would agree parallel circuits बने हुए. दोनों में से किसी को भी आप देख लो. जरा एक पॉइंट याद करो कि पैरेलल सर्किट में आप करंट के बारे में क्या पढ़ते थे. तो करंट आपकी पैरेलल ब्रांचेस में स्प्लिट करता था. व्हेन यू वर आस्क्ड इन ओ लेवल्स कि करंट कैसे स्प्लिट करेगा, क्या हाफ एंड हाफ स्प्लिट करेगा या नहीं, तो आप ओ लेवल्स में एक स्टेरियोटाइप आंसर ये देते थे कि जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उधर कम करंट जाता था और दूसरी वाली ब्रांच में ज्यादा जाता था. तो इफ यू आर अग्रीइंग विद द पॉइंट कि रेशियो की टर्म्स में डिवाइड होता था कि द ब्रांच हैविंग अ हायर रेजिस्टर गेट्स अ स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ करंट. तो यही सोचकर मैंने ये ऑप्शन आपको दिया कि सोचिए अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा. तो वो जो आने वाला करंट है, मैं आने वाले करंट को ये पिंक कलर से बना रहा हूं दोनों डायग्राम्स के अंदर. अब इस करंट को स्प्लिट करूंगा. तो पहले पहले लेट्स सपोज ये हो रहा था, आधा रेजिस्टर को मिल रहा था करंट, ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं, हाफ एंड हाफ स्प्लिट हो रहा था. तो मैंने समझाने के लिए अज्यूम कर लिया कि पहले करंट हाफ एंड हाफ स्प्लिट हो रहा था. अब क्या होगा. तो वुडंट यू एग्री कि जब आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो करंट का स्प्लिटिंग एक्शन अब ऐसे हो जाएगा कि रेजिस्टर को कम करंट मिलेगा. मैंने स्टाइलिस को थिन कर दिया. रेजिस्टर को कम करंट मिलेगा. मैंने स्टाइलिस को जितना हो सकता था थिन कर दिया है. और करंट का ज्यादा फ्रैक्शन, अब मैं स्टाइलिस को थिक कर रहा हूँ, करंट का ज्यादा फ्रैक्शन कैपेसिटर को मिलेगा. ये अच्छा बन गया. तो आप जरा दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करें. पहले मैंने अज्यूम किया था हाफ एंड हाफ हो रहा है, आधा रेजिस्टर को आधा कैपेसिटर को. अब रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टर विल नाउ गेट अ मच स्मॉलर फ्रैक्शन एंड मोस्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू द कैपेसिटर. श्योरली फायदा तो नजर आ जाना चाहिए आपको. If a larger fraction of current goes through the capacitor, then this will allow the capacitor to charge more effectively. उसकी वर्डिंग लिख देता हूँ. कहाँ लिखूं? ऐसे एरो बना के लिख देता हूँ. If the capacitor now gets a larger fraction of current
comma, it charges more efficiently, hence improving the smoothing effect. तो डायग्रामेटिक टर्म्स के अंदर जो रोहेल ने वर्डिंग लिखी है ना वो सही है कि बेस्ड ऑन द रेशियो थ्योरम if I increase the resistance of the variable resistor then I should expect a greater fraction of current to flow through the capacitor indicated by a thicker स्टाइल इसके साथ जो मैंने लाइन बनाई है ना रेड कलर की उसको ज्यादा थिक करके बनाया है सिर्फ समझाने के लिए आई थिंक इसकी कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है ठीक है तो मैंने थिक करके सिर्फ एक इंडिकेशन देने के लिए कर दिया है और दूसरी वाली साइड को मैंने रिलेटिवली थिन करके बनाया है just so that you understand a larger fraction of the current will flow through the capacitor. So if the capacitor now gets a larger fraction of current, it charges more efficiently. Thereby, it improves the smoothing effect. So diagrammatically, once again, अगर मुझे graphical terms में explain करना हो, many students try to remember it this way. वो इस तरह से learn करते हैं कि the effect of having multiple capacitors in parallel, the effect of having multiple capacitors in a parallel combination is similar to replacing the resistor with a variable resistor and increasing its resistance. Okay, let me repeat myself. The effect of or the impact of having multiple capacitors in parallel is kind of similar to replacing the resistor with a variable resistor and increasing its resistance. So diagrammatic terms में I think अगर मुझे show करना हो तो I should go like this. If this was the original diagram, एक सेकेंड ना guys. If this was the original diagram, then the one constructed with the mustard color marker shows you the impact of increasing the resistance. ठीक है जिसको वर्डिंग्स में अगर आपको बोलना हो ना तो द ग्राफ बिकम्स लेस स्टीप ठीक है सो हैविंग मल्टीपल कैपेसिटर्स इन पैरेलल and increasing the resistance of the resistor both of these factors kind of create a very much similar impact all right um, अब यार मुझे एक सेकंड देना मुझे लग रहा है कहीं ये वाला पेज मैंने ज्यादा ना लिख दिया हो वरना ये वन गो में जाएगा नहीं मुझे एक सेकंड दे दो मैं जरा चेक कर लूं फिर ताकि फिर नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाऊं ठीक है सो आगे प्रोसीड कर रहा हूँ तो जो नेक्स्ट वाली वर्किंग है इसी की कंटिन्यूएशन के अंदर दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ
full wave rectification. So previously हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन अभी देखी थी, तो अब जरा डिस्कस कर लेते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होगी. um, this can be achieved by using a combination or four diodes which are arranged in a special sequence this arrangement is called bridge rectification or full wave rectification. का advantage क्या है? So remember, in case of half wave rectification, 50% power was lost. So full wave rectification ensures no loss of power at the output. Now, how does the circuit look like? तो थोड़ा सा करा दूं, फिर conclude करता हूं. So the diagrammatic representation for a full wave rectification resembles the shape जो मैंने यहाँ पर अभी construct किया हुआ है. So basically, the empty spaces where I'm placing a question mark, these are the four positions where a combination of four diodes is going to be placed. तो चार diodes को मुझे इन empty spaces पे लगाना है. But before I start placing these diodes ना, पहले important चीज to be recognized वो ये है कि two opposite vertices, any two, will serve as the input. Input का मतलब है AC supply will be connected across any two opposite vertices. So imagine if I go for A and if I go for B, either A and B or C and D, जो भी सही लगे. But any of the two opposite vertices or any of the two opposite sides, so will serve as the input. So if I'm taking A and B as my input, तो मैंने इसके साथ एक AC सप्लाई ज्वाइन कर दी. आमने सामने वाले दो पॉइंट्स. हाँ, so that could be A and B or that could be C and D.
So any two opposite sides or any two opposite vertices rather, vertices लिख लो, will serve as the input. That's the AC supply. The remaining two opposite vertices will serve as the output. काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें इनपुट और आउटपुट का पता कैसे चलेगा? तो सिंपल सा तरीका ये है कि इनपुट पर आपको एसी सप्लाई नजर आ जाएगी और आउटपुट पर आपको रेजिस्टर नजर आ जाएगा. That's the standard way of distinguishing between what serves as the input versus what serves as the output. So AC supply जहां बनी हुई होगी ना, that will be your input terminals, और जहां रेजिस्टर लगा हुआ होगा that will be your output terminal. अब इसके अंदर empty spaces के अंदर मुझे चारों डायोड्स को प्लेस करना है, तो बस अभी बना देता हूं. नेक्स्ट क्लास में ये वाला पेज आज अपलोड आई थिंक नहीं कर रहा, इसको नेक्स्ट क्लास में ही अपलोड करूंगा पूरी वर्किंग के साथ. सो मैं वर्किंग यहाँ तक करा रहा हूँ, लेकिन इस पेज को आज अपलोड नहीं करूंगा, रादर इस वाले को नेक्स्ट वाली क्लास में अपलोड कर दूंगा, because the working will continue from this particular point. So I have positioned the diodes. इनकी लेबलिंग फिलहाल कर दूं और फिर नेक्स्ट वाली क्लास से I'll continue precisely from this particular point as to how the full wave rectification will work. So next class में इंशाल्लाह ये diode वाला काम भी पूरा हो जाएगा. So I've shown you the position of the 4 diodes arranged and the fact that the opposite terminals will serve as the input. So in this case A and B, while the other two opposite terminals will serve as the output, in this case C and D. So I'll stop at this point.